इंटरस्टेलर एक ऐसी फिल्म जो बहुत लोगों को पसंद तो आई थी लेकिन समझ में नहीं। क्यों समझ में नहीं आई थी? क्योंकि इसमें बहुत सारा रियलिस्टिक फिजिक्स और साइंस भरा हुआ। वेल, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म्स है। लाइक मेरा एक सपना है कि कभी अगर मेरे पास खुद का थिएटर हो तो मैं IMAX की कॉपी खरीदूं और ये फिल्म मैं 3D में दी। बट फिलहाल we'll just dive into little film things of Interstellar. Starting off with the first detail, it's in the opening credits. ऐसा कुछ बड़ा डिटेल नहीं है. If you look at all the producers' logos, Legendary, Syncopy, Paramount Pictures, all those logos follow a sepia tone. What they're trying to do is they're trying to incorporate the theme of the film right from the beginning. It's something that many filmmakers do. The second detail comes in the title frame. अभी शायद मैं थोड़ा ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज 3 act स्ट्रक्चर ऑफ अ फिल्म. ये बस मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ. सेटअप, confrontation, resolution. सेटअप में the characters deal with a certain kind of problem. स्टोरी में प्रॉब्लम क्या है वो हम पता करते हैं. Confrontation is where we see the characters confronting with the problem but usually fail. और resolution में they finally come up with a solution and that's how we come to the end of the story. अब ये जो टाइटल फ्रेम है यहाँ पे 3 एलिमेंट हमें दिखाई देते हैं. द बुक शेल्फ, डस्ट पार्टिकल्स और द स्पेस शटल. नाउ अकॉर्डिंग टू मी द डस्ट पार्टिकल्स रिजेंबल द सेटअप ऑफ इंटरस्टेलर, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स से ही कूपर फाइंड्स आउट अबाउट नासा कोऑर्डिनेट्स एंड दैट्स हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. द स्पेस शटल फॉर मी रिजेंबल्स कन्फ्रंटेशन, क्योंकि आई मीन द फिल्म्स नेम इज इंटरस्टेलर, तो ये स्पेस शटल में ही जाते हैं. एंड द थर्ड वन, द बुक शेल्फ रिजेंबलिंग रेजोल्यूशन, क्योंकि एंडिंग में कूपर टेसरैक्ट के अंदर होता है 5th डिमेंशन में. दैट्स हाउ ही फिगर्स आउट कि ओ ये है क्वांटम डेटा और दिस इज हाउ आई विल रिलेट टू मर्ज. सो वी कम बैक टू द बुक शेल्फ अगेन. आई नो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया बट आई एम काइंड ऑफ अ. अगला डिटेल इज इन द इंडियन ड्रोन सीक्वेंस. कूपर हैक्स द इंडियन ड्रोन एंड उसके लैपटॉप में हम थोड़ा कोडिंग देखते हैं जस्ट फॉर लाइक अ हाफ अ सेकेंड प्रोबेबली. स्क्रीन पे जो कोडिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, वो संस्कृत में है ना. बहुत लोगों के बहुत सारे रूमर्स है बट आई फील नोलन वुड हैव जस्ट थॉट इट्स एन इंडियन ड्रोन, तो व्हाई नॉट जस्ट इनकॉर्पोरेट संस्कृत एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, which would be very amazing. Talking about the laptop, I really love this little detail from the set design point of view या फिर art design point of view, whatever field that is. This film is filled with dust. तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज अ लैपटॉप शुड बी केप्ट सेफ, नहीं तो वो डस्ट से बहुत जल्दी खराब हो जाएगा. सो दे मेड श्योर कि लैपटॉप एक केस में, एक बहुत सॉलिड केस में कवर्ड हो, विच आई फेल्ट वॉज अ वेरी गुड डिटेल. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू द सीन जब कूपर व्यूज मैसेजेस फ्रॉम अर्थ के फैमिली से. We buried him out in the back 40 next to Mom and Jesse, which is where we would have buried you if you'd ever come back. Orph was there at the funeral and we don't see her that much. From the directional या editing point of view, we could have went back and forth between the family's perspective and keep coming back to Cooper, but यहाँ पे वैसा नहीं किया. rather जो फैमिली के मैसेजेस है वो एज अ बैकग्राउंड वॉइस मतलब नरेशन में प्ले हो रहे हैं एंड वी सी कूपर्स एक्सप्रेशन ओनली विच इंटेंसिफाइज एंड इट ऑल्सो एड्स ऑन टू द होल स्टोरी बिकॉज ये पूरी स्टोरी हम कूपर के पर्सपेक्टिव से ही देखते आ रहे हैं. और थोड़ा आगे बढ़ते हैं. At the time when Dr. Mann, played by Matt Damon, is trying to hijack the Endurance, and Cooper बार बार warning देते जा रहा है कि Override. Unauthorized. Override. Unauthorized. Do not attempt docking. I repeat, do not attempt docking. Please respect. but Dr. Mann doesn't pay heed to what Cooper says. And ये हम editing में देखते हैं जहाँ पे Cooper is trying to say something and the dialogue is abruptly cut. Do not attempt docking. I repeat, do not attempt docking. Please respect. These small little edits intensifies the whole moment क्योंकि Hans Zimmer का background score play हो रहा है and meanwhile we are not getting the full dialogue of Cooper because we are more interested in
what does Dr. Man do? Will he succeed or no? तो कूपर जो भी बता रहा रहेगा, अगर एक बार में समझ गए कि वार्निंग है, तो we need not listen to the whole dialogue. Moving on to a detail at the very end of the film, जहाँ पे we see Dr. Brand on Edmund's planet. So astronaut Edmund was her love interest, and finally we understand कि Edmund के planet के data samples जो है वो बहुत promising थे, and that's a habitable planet. And for a very छोटा moment we see Dr. Brand kneel down at this rock जिसपे Edmund का नेम प्लेट है, एंड पूरा नरेशन चालू है, पूरा इंटेंस म्यूजिक चालू है बैकग्राउंड में. सो वो जो मोमेंट है वो फटाक से निकल जाता है. बट व्हेन आई पेड अटेंशन टू इट, व्हाट इज, आई वाज लाइक ये क्यों डाला यहाँ पे, लाइक व्हाट्स द पॉइंट. देन आई फिगर्ड आउट दैट डॉक्टर ब्रांड इज एक्चुअली कीपिंग अ फ्यूनरल फॉर एडमंड. इमेजिन अ प्लैनेट जहाँ पे कोई रहता नहीं है. द फर्स्ट ह्यूमन टू गो देयर वाज डॉक्टर एडमंड, एंड देन हिज लव इंटरेस्ट comes there and keeps a funeral, the first funeral on a new planet. अब जो मैं डिटेल्स बात करने वाला हूँ, those are going to be related to color. So act 1 of this film, हम देखते हैं कि मर्फ is wearing blue clothes. मर्फ का कैरेक्टर ऐसे बिल्डअप हो रहा है that she likes space exploration and all of that, so that is why blue is given to her. Whereas all others are just trying to survive on Earth. They have already given up on the idea, including Cooper, कि भाई हम तो मरने वाले हैं, इसके आगे अभी कुछ है नहीं. So they are given the color of Earth, which is brown. फिर आगे when Cooper figures out about gravity, Cooper is wearing blue, whereas Murph is wearing brown, like वो brown scarf लेके बैठी है. This is where I think is the switch. Because now Cooper will go to space, but Murph will remain back on Earth. Before leaving Earth, Cooper tries to मनाओ Murph कि यार मैं जा रहा है, मुझे जाने दो. And he shows her his watch and goes like, Time's gonna change for me. It's gonna run more slowly. दोनों के watches black है. Again, coming back to the art design point of view, the watch could be of any color, but we are talking about Interstellar as a film, जहाँ पे black hole है, बहुत सारा black color involved है. तो I thought ये जो color के watches है black, that was the best choice for this kind of a film. Then when Cooper has left, Dr. Brand, Michael Caine, he comes to meet Murph, and वहाँ पे Murph has worn brown and not blue. So it's like, okay, now this character is going to stay on Earth and ये नहीं जाएगी, whereas earlier she was wearing blue. कोई भी ऐसा एक strong saturated color नहीं दिखता है, except for one scene जहाँ पे Cooper messages देख रहा है, जो video messages आ रहे हैं Earth से, and he has this red scarf around him. That is the only moment that I found जहाँ पे हम एक इतना saturated strong color देखते हैं. And according to me, why this is so important is because the red scarf might indicate danger, क्योंकि red color danger signify करता है, बहुत strong color है ये. So I thought in this scene, rather from this scene, the movie is going to go into unknown space. So this red scarf means something. Color की तो बातें हो गई. Now let me just throw you with some trivia, which you may already know. Starting with the cornfield, जो हम starting में देखते हैं film के. Nolan is not a fan of CGI. He believes in practical effects because, according to him, people understand the difference between what's animated and what's real. So what he did was he grew a damn cornfield, acres of cornfield. Now you may think that that may be costing a lot and the producers might go into a loss, but nahin. This guy and his team, पूरी फिल्म बनने के बाद कॉर्नफील्ड जो भी जितना भी ग्रो किया था वो सब बेच दिया, and the legend made a profit out of it. Next one is about the poem "Do not go gentle into this good night." Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right,
because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. This poem was written by Dylan Thomas, and it is rumored that he wrote this poem for his ill father, but I'm not sure because of course मैंने Wikipedia पे पढ़ा है. Next one is about the location of the planets. I mean जो set जहाँ पे मतलब shoot किया था. For example, Dr. Man's planet, वो जो icy planet है, that location is the same location जो Batman Begins में हम Ra's al Ghul और Bruce Wayne की एक fight देखते हैं. Is the same location वहाँ पे Interstellar भी shoot हुई थी. For this film, Nolan was like मुझे एक बहुत ही realistic view चाहिए black hole का. So he took time and he teamed up with this physicist Kip Thorne, if I'm not wrong, and he worked with him to render out the black hole, which later helped in actual research for black holes, which is a big thing. So the black hole that we see in this film is almost close to the realistic picture of a black hole. And जो first image black hole का हमें मिला था, we have seen and taken a picture of a black hole. Here it is. So it is a big deal, honestly. So ये थे trivia related details. Now I'm going to tell you details related to music because भाई बहुत तोड़ म्यूजिक है इस फिल्म में. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. हांस जिमर ने फुल फिल्म को स्कोर किया था. देयर इज दिस वन म्यूजिक पीस जो ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट यूज करके बनाया गया था, जो नोलन ने 3 अलग अलग जगहों पे इसे यूज किया. पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैं कौन से म्यूजिक पीस के बारे में बात कर रहा हूँ. सो पहली जगह जहाँ पे नोलन ने यूज किया है इज in the opening जहाँ पे Cooper gets up from his bed and he looks at the cornfield. The second scene is in the docking scene. Killing main engines! Okay, we're out of orbit. And the third scene is where Cooper finally meets Murph, who's old right now. And if you imagine all these 3 scenes, it's like we have stepped over each stage of the film. From the cornfield, okay, this is the problem, we are dying, to the confrontation part that, oh, this is the moment jahan pe they could have just died, but they survived. And the resolution part, where we come full circle because story ke start hi वैसे हुई थी that he leaves Murph and he finally meets her. Talking about the background music, so directors usually एक idea दे देते हैं to music directors कि उन्हें कैसे type का background score चाहिए. For this film, Nolan, he told Hans Zimmer that this was a story about what it meant to be a father. And that's it. He didn't tell him कि ये interstellar space travel के बारे में है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है. Because if you look at the whole film, the central story, or rather the sub-story, is Cooper's journey of trying to save Earth, not just for the world, but mainly for his daughter. And later on, when Hans Zimmer was composing this score, he was like, okay, let me just make it from my own experience because, well, I am a father. And it turned out to be really great. Talking about music, I really like this one particular shot where Cooper hands his earphones to Doyle, if I'm not wrong, if he's Doyle, and we cut to this shot जहाँ पे हम Saturn को एक तरफ देखते हैं और यहाँ पे Nolan has used the sound of crickets and thunder. And imagine like this is something that I would feel if I would be in space and I look at Saturn. I mean, मुझे पता है कि ये planet है, but it's such an unknown thing, like इतना strange thing है. Lastly, I really love the scene in the docking scene जहाँ पे
when Dr. Mann fails to lock his space shuttle to the endurance, there is this shot जो हम space के point of view से देखते हैं as if we are in space. Listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. It is not. There's no explosion sound. There's just silence. And this is what I loved. That उधर एक intense music नहीं डाला है. There's no explosion sound कि boom boom कुछ नहीं, बस silence. It's just amazing. I cannot explain कि वो मुझे इतना क्यों पसंद आता है, but it's just crazy. Or maybe the editors were lazy and it worked for them. Who knows? So those were my little film things of Interstellar. I hope you guys liked it. बाकी सब भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाते रहता हूँ. Thank you for watching. आपको पता है क्या करना है. शुक्रिया. Bye bye.